Hey everyone, good evening. Hi guys, welcome to the first lecture of SI and CI, simple and compound interest. Can you guys confirm if you are able to hear me? सुनाई दे रहा है क्या? Alright, under this SI and CI, we'll be covering simple interest, how to find out simple interest, how to find out rate of interest, time, how to find out the principal, questions like this. We'll be doing compound interest, we'll be doing SI versus CI, questions that deal with difference between SI and CI. We'll be doing questions on depreciation, population. Yes, so we'll start with this to begin with. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer. I'm from Chennai. I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude, and please don't forget to follow #CAT live daily the next time you're on Instagram. These are the 2 Telegram groups that are open for letting you know what the plan is. Hi Shreyashri, good evening. All the upcoming sessions, सारे plans यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. This group is open for discussion as well, so you can join this group for that. If you have any questions, queries, you can discuss doubts, all of that. Hi Gaurav, good evening. Guys, these are all the ongoing and upcoming batches. If you are a subscriber, then please enroll into them. If you are not a subscriber, then you can get into Plus or Iconic. You can also join me on my complete weekday batch starting on the 12th, which is Monday, from 10 a.m. to 12 p.m. We'll be covering entire algebra there. Yes, full algebra we'll be doing in 9 sessions, 2 hours each. So in 18 hours we'll be covering entire algebra. Algebra takes up a big chunk of your quantitative aptitude ke weightage. Yes, so about 25%, 20 to 30% के बीच में algebra का importance होता है, and these questions are very easily doable, so it would make sense if you become a part of this. You can join this by taking the subscription and pick up the 1 month, 3 month or 6 months, but if you ask me, the best are 12 months and 24 month packages. Use the code Surana Live for your 10% discount. You can also take Iconic subscription. If you pick up 12 or 24 months, use the referral code Surana Live for a 10% discount. Yes, please note guys, from the 14th the prices are going to change, so please join before the prices change, because after that the prices are quite high. Yes, take the advantage of joining as soon as possible. Alright, let's start with SICI. Let's first discuss its terminology. Under SICI, we have something called principal, which is nothing but your initial investment or initial value, whether the money is borrowed from somewhere or if it is lent to something, either which ways, this would be your principal amount. This is denoted by P. Yeah. Then you have your rate of interest. The rate of interest is what is applied every single year. This is always given in percentage per annum. If it is not given in per annum, then it would be given for how many months or for what part of the year this is. Half yearly, semi-annually, quarterly, monthly, whatever it is. Yes, this is denoted by R. So for 1 year, yes, the interest amount is basically equal to R percentage of P. Got it? Yes, so here you also have something called time, which is denoted by T. In most cases, time is normally given in terms of years. If it is not given in years, then you can convert it to it, right?
could be monthly, semi-annually, whatever it is, right? You can convert it to them. Okay, then you have n, that is number of compounding. Yeah, this will be used in compound interest, number of compounding, how many times it gets compounded per year. Yes, so if it is annually, then n is equal to 1, because one time every year you compound the amount. If it is semi-annually, that is once every 6 months you compound the amount. What do you mean by compound? Add it back to the principal. Yes, n will be 2. If it is quarterly, then n is 4, because in 1 year 4 times you will be compounding. Yes, if it is monthly, then it will be 12. So this is annually. Yes, this is half yearly. This is quarterly. Monthly. If it is weekly, once every week, and there are 52 weeks in a year, so 52 times, this is weekly. Yeah, if it is daily, then it will be 365, because there are 365 days in a year. Yes, this is daily, and so on. Yeah, and finally would be your I, interest. Interest, like I said, is R percentage of P, provided it is for 1 year. For 2 year, it will become 2 times R percentage of P. 3 years, it will become 3 times R percentage of P, so on. Yes. And what is amount? Your final amount. Final amount is always equal to principal plus the interest amount. Yes, whatever is the interest amount plus the principal. Cool, that is your final amount. Okay, now let's talk about interest in total. Like I said, there are two forms in which interest are calculated. One is called simple interest, the other is compound interest. Yes. Now simple interest, just like the name suggests, it is simple. It is basically just R percentage of P applied for how many ever years given. Under compound interest, your rate of percentage will depend upon how many compounds are done. Yes, for 1 year it will be once, 2 years it will become R percentage of P, and so on. Yes. Hi Manish, good evening. Hello Gaurav. Okay, so first let's try this question out. There's a question on the screen. Let's read this. Okay, a bank is approached with 2 schemes, one involving base principal remaining a constant and equal interest coming in every year. So there are 2 schemes. This is to help you understand how simple and compound interest works. So scheme 1, scheme 2, there are 2 schemes. In the first scheme, what happens? Involving the base principal remaining constant. Your principal remains constant. Yes, and equal interest coming in every year. So interest in the first year will be the same as interest in the second year, will be the same as interest in the third year, same as interest in the fourth year, so on. Yes, so for T years, your interest for the Tth year, yes, let's say if it's 5th year, then for the 5th year interest will be the same. Yeah, and the other involving the base principal increases by the rate of interest every year. So what happens? Your P is no longer constant. Yes, principal in the first year, if it is P, then principal in the second year will be increased by R percentage of P. That is what interest of the previous year, interest of this particular year will become a part of this principal. For the third year, it will become P plus R percentage of P. Yes, and upon that previous year's interest again. Yes, R percentage of P plus R percentage of P, like this. Okay. Which one should the bank accept? Which one should the bank accept if they want greater interest? Interest कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? Scheme 1 पे interest ज़्यादा रहेगा या Scheme 2 पे interest ज़्यादा रहेगा? जल्दी से बताओ. Where will the bank get more interest? Scheme 1 or Scheme 2? Scheme 2, right? Scheme 2 में interest ज़्यादा रहेगा क्योंकि principal हर साल बढ़ते जाता है. Yeah, so as an example here you can take, if the principal is 100 rupees and every year 10% is the rate of interest per annum, then what happens here? Scheme 1 में first year का interest 100 रहेगा,
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 100 रहेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी 100 रहेगा. सो टोटली इन 3 years 300 rupees. But in this case what happens if the principal is 100 rupees और 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगा है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रहेगा 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 10 रुपीज़, या इसको 1000 ले लो, चलो 1000 ले लो इसको. तो फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में क्या होगा 100 और उसके ऊपर इंटरेस्ट 110, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 110 पे वापस 10% इंटरेस्ट 121 ऐसे. तो इन 3 years, in all the 3 years together, your overall interest becomes how much? 331 rupees. Are you able to understand? Yes guys, everyone? So where will the interest be greater? Here it is 300, here it is 331. So this scheme is called simple interest. In this scheme, your interest rate, principal is constant, interest rate is the same every year. This is called compound interest, where the interest rate remains the same, but the principal keeps changing every year. Yes? Yeah, so basically banks, if they go for the second scheme, they do go for the second scheme, पैसा ही पैसा होगा. Okay? चलो अभी सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट. कब सिंपल रहता, कब कंपाउंड रहता, अभी अपन ने देखा. प्रिंसिपल अगर कांस्टेंट है तो वो रहता सिंपल. इफ प्रिंसिपल कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स इंक्रीजिंग, देन इट बिकम्स कंपाउंड इंटरेस्ट. गॉट इट? यस. चलो सिंपल इंटरेस्ट पे चलते. पहले व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय SI. सिंपल इंटरेस्ट इज बेसिकली P times R times T by 100. ये फॉर्मूला सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस फॉर्मूला, राइट? तो इसको समझते पहले कैसे होता है. ऑन 1000 रुपीज एट 10% पर एनम क्या होता है, फर्स्ट ईयर में इट इज 100, second year also it will be 10% of 1000 which is 100. So for 2 years it is 200. Can I say this 200 is nothing but 20% of 1000? That is nothing but 2 times R percentage of P. तो अगर ये मैं T years के लिए पूछूं, interest for T years together is going to be how much? T into R percentage of P, which is nothing but T into R into P. R percentage है इसलिए by 100. This is the logic behind the formula. Yes. इसमें आप कोई भी ईयर का इंटरेस्ट लोगे वो हमेशा सेम रहेगा. You can take the interest of any year, it will always be the same. For first year, second year, third year, for the Tth year together, it will always be the same. Yes. चलो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसमें. रीड दिस. How much would 452 rupees become in 5 years at 12% per annum? Try this. बताओ इसका आंसर क्या होगा. 452 should become in 5 years at 12% per annum. What is our answer? Shreyashi says B. 723.2. Okay, how about others? Gaurav also says B. So how much would this become? तो ये क्या है, ये है अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो योर प्रिंसिपल इज 452, टाइम गिवन इज 5 years, rate of interest is 12%. But what are they asking? Are they asking for the interest or are they asking for the amount? They're saying how much would it become. The principal itself should become something, that means they're asking for the amount. Yes, so your amount would be equal to what? 5 into 12% of 452.
Yes, but this will give you what? How much? What will this give you? This will only give you the interest amount. So on this, if you add 452, you will get your answer. So what is this? This is 60%. 60% of 452 plus 452, that is nothing but 160%, which is 1.6 times 452. Are you able to get this, guys? Yes, so 1.6 times 452 is how much? 723.2. Yes, 1.6 times 450, you can do it like this. 1.6 times 450 is basically 0.8 times 900. 0.8 times 900, which is how much? 720. So our answer will be a little more than 720, which is B, 723.2. यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगाओगे तो सेम ही चीज होगा. यू विल गेट द interest is going to be what? 5 into 12 into 452 by 100. Yes, you will get how much here? 271.20. इसको आप अमाउंट निकालोगे तो P plus interest, that is 452 plus 271.20, which is how much? 723.20. Got it? Everybody? All right, try this one now. A very basic question. सो कई बार क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो दिस इज व्हाट यू विल अस्यूम एज डिफॉल्ट. आप डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट ही अस्यूम करोगे उस क्वेश्चन के लिए. ओके, गौरव सेज ए 16,000. ओके, हाउ अबाउट अदर्स? Pankaj says D, none of the above. तो क्या बोल रहे हैं? For 3 years, which is nothing but 36 months में, if the amount is 24,000, yes, this is the interest. Since interest is equal for every year, every month, सब कुछ equal ही रहेगा. We are looking for 2 months, correct? 2 months मतलब क्या? Dividing it by 18. तो यहाँ पे भी अगर आप divide करोगे 18 से, you will get it. So 24,000 by 18. This will give you your answer. Yeah, this is what? 6 3 times. This is 6 4,000 times. So 4,000 by 3 is how much? 1,333.33. Correct. So what is your actual answer? None of the above is the right answer, which is 1,333.33 rupees. Got it? Clear now everyone? Hi Kushagra, welcome buddy. Yeah, क्या सबको समझ में? Did you guys understand this? Kushagra, progression, to be honest, progression we've completed, but we will soon be doing progression. नया बैच में अभी arithmetic के बाद we will do progression. Yeah. Then shall we move on? चलो. Try this question out. If a local bank lends $4,500 and receives $6,000 in 3 years, then how much does it charge for every $100 every year? Try this out.
पंकज 9 क्या आंसर? 9 क्या? $9 नहीं, ठीक है। हाउ अबाउट अदर्स? Shreyashi says 33.33. Okay. How about others? $11.11. Yeah. So what's happening? See, for every 4,500, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, it is understood it is simple interest. Yes, $4,500 पे 6,000 मिल रहा है ना? Yes, तो $100 पे कितना मिलेगा? This is basically dividing it by 4.5. Correct? Correct. 4,500 divided by 4.5 is 100. Agreed? No, sorry. By 45. My bad. 45. So here 6,000. If I divide it by 45. I'll get it for every $100, right? So for every $100 it is how much? 6,000 by 45. Yes, this is yeah, this is 9 में नहीं जाएगा. Let's say this is 15 3 times. This is 15 4 times 400 by 3. So 400 by 3 is for every $100. Yes, 400 by $3. But this is for what? Every 3 years. है ना? This is for what? Every 3 years. तो अगर 3 years में 4 क्या? What would be 1500? Yeah, correct. You go for direct percentage calculation. Yes, you can. So 3 years में 400 by 3 अगर आएगा तो 1 year में कितना आएगा? 1 year में कितना आएगा? In 1 year it will become 400 by 9. Correct? How much does it charge? Yeah, how much extra basically? चलो कोई नहीं. How much extra basically they are asking per year? Yes, so you can do 1500. Yes, how much does it charge? Yes, so extra amount is how much? 1500. Yes, so this will become 1500 by 45. Yes, that becomes 33.33. Correct? So 1500 by 45 is what you will get in 3 years. Yes, in 3 years if it is 33.33 rupees, then in 1 year it's going to be 33 by 3, 11.11. Yes, yeah. So 11.11. If you directly take 6,000 like I took, you would get it in terms of मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. 6000 के टर्म्स में भी लोगे तो आंसर आ जाएगा. यू वुड हैव गॉटन 111.11. यस, दिस वुड बी फॉर फुल, this will be full amount. On this if you subtract 100% you will get it, but either which ways. Yeah, done. Chalo, now let's go start doing questions where we have to find the principal, right? जहाँ पे बाकी सब कुछ दिया होता है. Interest could be given, amount could be given, rate of interest, time. इनमें से कोई 3 आइटम दिए होंगे. We will have to find the principal. हाँ, so look at this question. A bank receives 815 in 3 years and 854 in 4 years. How much did the bank lend out initially? Receives मतलब क्या है? Amount है, not interest, amount.
ट्राई करो ये वाला. Optimistic girls will be doing both. First, right now we are doing SI. After we are done with SI, we'll be doing CI. Both will happen today only. अभी के लिए SI कर रहे हैं. ट्राई करो ये वाला. यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है. ओके, प्लीज बी केयरफुल गाइस. अमाउंट दिया हुआ है, नॉट इंटरेस्ट. ठीक है. पंकज से सी 698. अनामिका से सी, शाश्वत से सी. वेरी गुड श्रेयसी, सुपर. Okay, so what are they saying? See, the amount in 3 years, amount for all 3 years is 815, which is nothing but what? Principal plus 3 times the interest. Agreed? Interest for first year, interest for second year, interest for third year. And then they're saying in 4 years the amount is 854. That is principal plus 4 times the interest for first, second, third and the fourth year. Yes. If I take the difference between them, if I find the difference between them, what will I get? I'll get the interest, which is nothing but 39 rupees. Correct? So interest is 39. Can I find out the principal from here? Yes, if interest is 39, can I find the principal? Of course. So what will happen? Principal will be equal to 815 minus 3 times the interest, which is 815 minus 3 times 39, which is how much? 117. 815 minus 117 is going to be how much? 698. Yes. Option C is the right answer. Very good. So this you need to understand. This you need to understand. If you find out the difference between AN and AN minus 1, amount of n years and amount for n minus n years, you will get interest. Yes. Are you getting this? If you're finding out interest of, if you find out the difference between AN and AN minus X, then you will get the interest for X years. For example, 5th year's amount and 7th year's amount, if it is given, if I find the difference between them, the difference will be 2 times I, 7 minus 5I. Cool? Done? Chalo. Next question. Read this question. ऑप्टिमिस्टिक गर्ल, हाँ एनमैट की क्लासेस भी होती है. अभी नहीं होगी, एनमैट में अभी टाइम है, बट वी विल बी कवरिंग द सेम कॉन्सेप्ट्स एज एनमैट. एनमैट में भी सेम ही कॉन्सेप्ट्स है. द क्वांट फॉर एनमैट इज द सेम फॉर क्वांट ऑफ कैट. ओनली द डिफिकल्टी लेवल इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, इसमें थोड़ा सा हाई रहेगा, बट द कॉन्सेप्ट्स आर सेम. शाश्वत, या percentage points only. Percentage points only. 6% higher बोल रहे हैं.
is a 6% higher. They're not saying that one is 6% greater than the other, ऐसा नहीं बोला. So it is always percentage points only. Yeah. Okay, so Pankaj says इसका आंसर C है 2100. IIFT की level is also, IIFT का level is a little lower than CAT, but it is greater than NMAT and SNAP. इसका level CAT से कम रहता है, but NMAT SNAP से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. Very good Shreyashi, Saurabh, Anamika, very good. Got it, C. Very good. So what are they saying now? They're saying that for a certain rate for 5 years, right? For a certain rate for 5 years, he would have gotten something else. Yes, but अब जो 6% higher कर रहे, 6% higher for 5 years of the principal, you will get $630 more. Correct? तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 6% फॉर 5 years का डिफरेंस है, अपॉन P विल गिव अस द 630. एग्रीड? तो ये क्या है? 30% ऑफ द प्रिंसिपल इज 630 और द प्रिंसिपल इज नथिंग बट 630 by 30 into 100, which is 21 into 100, $2,100. Yeah? Got it? तो ये कैसे आया? How did we get this? See, if I say for the first year, the interest amount is going to be P times R times T, correct? That is 5 times PR by 100. Yes. The new interest, which is $630 more, sorry, $630 more, is going to be same 5 years only, same principal, but rate of interest is what? R plus 6 by 100. So if I take the difference between both of these, if I find out the difference between both of these, then what happens? और if I equate, अगर मैं ये 630 को यहाँ पे लेके चले जाऊँ, तो I can equate or find out the difference. Yes, difference between both of these would fetch me how much? What? It will fetch me 5PR by 100 subtracted from 5PR plus, okay, 5R plus 6, ऐसे ही रहने दो, by 100. This will give me 630 rupees. समझ रहे हो? तो ये 5 को आप कैंसिल कर सकते हो from the other side. Yes, you can cancel off this 5 to the other side. You can send the R to the other side. You will get P into R plus 6 minus R would give you this much. Yes, ultimately you would end up getting what? Principal is going to be 2,100. Clear? डन. क्योंकि 5PR by 100 5PR by 100 कैंसिल हो जाएगा. 5PR by 100 5PR by 100 या 5 कैंसिल कर दो. टेक इट टू द अदर साइड. व्हाट विल हैपन? 630 डिवाइडेड बाय 5 इज बेसिकली डबल ऑफ दिस, व्हिच इज 126 रुपीज. यस, तो क्या हो जाएगा? PR by 100 प्लस 6 times P by 100 माइनस PR by 100 is 126. और ये कैंसिल हो गया. ये 6 times P is 12600 और P is 12600 by 6, that is 2100. तो ये इतना बड़ा इक्वेशन लगा के सॉल्व करके करने से अच्छा है डायरेक्टली कम अप टू दिस. दैट्स इट. कूल. चलो, हाय गौरव, गुड इवनिंग बड़ी. आ जाओ आ जाओ. आया ना पिछला वाला? सबको समझ में आ गया ना गाइस? डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल डू दैट रियल सून. जल्दी करेंगे वो, टेंशन मत लो. आई लेट यू नो अबाउट ऑल द एग्जाम्स. आई लेट यू नो अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस. आई विल लेट यू नो द स्टडी प्लान. सब पे सेशंस करेंगे. आई लेट यू गाइज नो. ओके. Optimistic girl, join this Telegram group. I will update when I'm taking that session. I will be doing that soon. But ये वाला Telegram group पे join कर लो. Yes. Saurabh says A 1200.
Yeah guys, Gaurav says A, Saurabh says A, 1200. How about others? दोनों गौरव ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ टोटल ऑफ $1500 वेर बोरोड। यस, तो पहले इक्वेशन से करके बताता हूँ कितना मुश्किल होगा अगर इक्वेशन से करेंगे तो, राइट। तो 1500 टोटली बोरो किया था। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट बैंक में x है तो सेकेंड बैंक में कितना रहेगा, 1500 माइनस x। यस, इस पे 12% चार्ज किया विच इज 0.12x, और इस पे कितना 14% चार्ज किया विच इज 0.14 इंटू 1500 माइनस x, करेक्ट। इन दोनों को मिला के एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, $186। दिस इज योर इक्वेशन। ये सॉल्व करो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। सो 0.12x प्लस हाउ मच वुड दिस बिकम, 0.14 into 1500, which is 210 minus 0.14x is 186। yes, तो इन दोनों को वहां पे लेके चले जाओ, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, 0.02x is going to be equal to how much, 186, 210 minus 190 which is 2014, correct? Yes, sorry, 24, not 14, 24. So 0.02x is 24. We want x, that is 24 by 0.02, that is going to be $1200. So ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मेथड, रेगुलर मेथड के भाई नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको एक क्विक शॉर्टकट, दिस इज कॉल्ड एलिगेशन। अगर आपको एलिगेशन आता है तो ओके, वरना अभी समझने की कोशिश करो, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अस्यूम करेंगे, लेट अस अस्यूम कि पूरा $1500 जो है, पूरा $1500 जो है, पूरा फुल $1500 अगर मैं 12% पे करता, है ना, पूरा $1500 अगर मैं 12% पे करता तो मेरे को कितना इंटरेस्ट आता, हाउ मच इंटरेस्ट वुड आई हैव गॉटन, 12% ऑन फुल 1500। यस, दैट वुड हैव गिवन मी हाउ मच, 180 रुपीज, करेक्ट। $180 मिलता मेरे को, बट मेरे को एक्चुअल में कितना मिला, $186 मिला। ये $186 क्यों मिला, जो ये एक्स्ट्रा $6 मिला वो क्यों मिला, क्योंकि सम अमाउंट, कुछ अमाउंट 14% पे भी लगा था, मतलब 2% एक्स्ट्रा पे भी लगा था। तो कौन सा अमाउंट एक्स्ट्रा था, 2% ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट वुड बी 6। तो अपना एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया, 300। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट 300 है, 1500 में से $300 14% पे लगा था, तो 12% पे कितना लगा, 1500 माइनस 300, 1200। यार समझ में आप लोगों को, हाँ बोलो अगर ये समझ में आया तो, ये आ गया समझ में तो बोलो हाँ। यस, सुपर। तो ये इक्वेशन बनाना, दिस इज योर नॉर्मल मेथड, राइट। रेगुलर अगर आप स्कूल में होते और ऐसा क्वेश्चन आता तो अभी यहाँ पे क्विकली जस्ट यूज दिस, ठीक है। चलो, now let's go do some questions on simple interest। सिंपल इंटरेस्ट में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। yes, how to find out the rate of interest when principal is given or interest amount for 2 different years are given and so on. So read this question, what rate of interest results in an amount of 432 in 1 year. So amount in 1 year is 432 and 504 in 2 years. So amount in 2 years is 504. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
ट्राई करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. ट्राई कर रहे हो आप लोग? वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज. Pankaj says D, 20%. Okay. Others? Pankaj says 20%. Anamika says 20%. Very good. Very good, Gaurav. Very good, Saurabh. So we know that if I find out the difference between amount for the second year and amount for the first year, 2 minus 1 इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरे को, 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, करेक्ट है ना. 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 504 माइनस 32 विच इज 72 रुपीज, करेक्ट. ये 72 रुपीज क्या है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर. तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट में से मैं अगर इंटरेस्ट निकाल लो तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा. एग्रीड. फर्स्ट ईयर के अमाउंट में से मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लूँ तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा. सो फ्रॉम 432 इफ आई रिमूव द इंटरेस्ट आई विल गेट 360 विच इज व्हाट? प्रिंसिपल. अब मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि आर परसेंटेज ऑफ पी इज बेसिकली योर इंटरेस्ट अमाउंट, करेक्ट. तो अगर मेरे को आर निकालना है तो व्हाट विल आई हैव टू डू? I divided by P into 100, correct, which is what? 72 rupees for 360 rupees is how much? 20%. Yes, you can also do it directly. डायरेक्टली कर सकते हो. एक बार 72 आ गया, so 72 divided by the amount 432 into 100, this is how much? 120%, correct. 432 पे 120%, नो सॉरी, नहीं नेवर माइंड, छोड़ो, जाने दो, लेट इट गो. You would any which ways need the principal for it, so okay, चलो ठीक है. Try out this question. So they're asking what percentage per annum will double a sum of money in 15 years. 15 साल में प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है. जैसे वो नहीं है 21 दिन में पैसा डबल, जैसा 15 डेज में 15 years में पैसा डबल, 15 साल में पैसा डबल. Yes, this is also Anuradha but a slower version of it. Anuradha Pro Lite Max S. D 6.6%. Saurabh says D. Anamika says D. Optimistic says C 6.9. Gaurav says D. Okay, both the Gauravs say D. Optimistic girl also says D now. Okay. Again, what are they asking? Rate of interest. तो इसको पहले स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, फॉर्मूला को रखे, राइट. वी नो दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट P times T times R by 100. यस. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो पैसा लगाया था वो डबल होने का है.
द अमाउंट शुड बी 2 times ऑफ द प्रिंसिपल, करेक्ट। हमें 100 रुपया लगाया तो 200 निकल के आना है बाहर, राइट। अमाउंट बिकम्स 2 times प्रिंसिपल एंड वी नो अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इफ आई इक्वेट दिस व्हाट डू आई गेट? आई गेट इंटरेस्ट शुड बी इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट, यस और नो। मतलब मैं अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा उस पे मेरे को अगर 100 रुपीज का इंटरेस्ट आया तभी तो वो डबल होगा ना अमाउंट, यस। तो इफ आई प्लग दैट इन हियर दैट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर इक्वल, प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू P टाइम्स T क्या है 15 years into R by 100, yes। P कैंसल हो गया, what will I get? I'll get R is equal to 100 by 15 which is how much? 6.66 bar percentage, yes। पर ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड, मतलब इतना सब कुछ कौन करेगा, राइट। सिंपल लॉजिक, इफ योर अमाउंट नीड्स टू बिकम डबल, इफ योर अमाउंट नीड्स टू बिकम डबल देन योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बिकम 100%, यस। आपका ओवरऑल पूरा जितना भी साल का है पूरा मिला के 100% होने का है। मतलब अगर 15 years में रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है तो इन 1 year, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एनम पर ईयर, तो 100 by 15% which is how much? 6.66 bar percentage, that is option D। समझ गए? यस। तो अगर ये वाला क्वेश्चन डबल नहीं होता, अगर ये वाला क्वेश्चन डबल नहीं होता और ये होता 3 times ट्रिपल, ट्रिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता? जल्दी से बताओ। ट्रिपल पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता? 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे 300 रुपए मिलने चाहिए। ऑन इन्वेस्टिंग 100 रुपीज द एंटायर रिटर्न्स इज 300 रुपीज, यस। 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे 300 रुपीज, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? 200%, करेक्ट। 100 रुपए इन्वेस्ट करने पे अगर मेरे को 300 रुपए मिल रहे हैं, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा 200 रुपए मिले, है ना। 200 रुपीज इज व्हाट? 200% ऑफ 100 रुपीज, करेक्ट, डबल, यस। तो ये 200% हो जाता इफेक्टिव। तो 15 years अगर दिया है तो 200 by 15, 10 years दिया है तो 200 by 10, जो भी, यस। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसका -1 करना है। ट्रिपल मतलब 3 times, 3 - 1 2, 200%। अगर 4 times दिया है तो 4 - 1 300%, है ना। नाउ लेट्स गो ट्राई सम क्वेश्चंस आउट वेयर वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट, अमाउंट, इनमें से कोई 3 वैल्यू देंगे, हमें टाइम निकालना है, या। सौरभ, टू बी ऑनेस्ट SI/CI के क्वेश्चंस डायरेक्टली बहुत कम आते हैं। SI एंड CI के क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आते, डायरेक्टली ज्यादा नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। बट CI एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यू विल बी अप्लाइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेसिव जब होता है तब, राइट। यू विल बी अप्लाइंग दिस इन वेरिएशन, है ना। तो ये बहुत जगह पे काम आता है, यस। CI का कॉन्सेप्ट आप मिक्सचर्स में भी लगाओगे, मिक्सचर्स में भी आप CI का ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना। तो भले ही डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा आ जाता है। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। गौरव से C 5 years, अक्षय, डू यू मीन प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस? नहीं समझा मैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट। मैक्सिमम चांसेस वाला टॉपिक मतलब? जयराज says D 10 years, Saurabh and Pankaj are saying 5 years, yeah, correct, optimistic girl,
टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सब में आता है. वेरी गुड. गौरव says 5 years. Okay. चलो let's look at this. They're saying what if 140 rupees yields 7 rupees as simple interest. तो अपना प्रिंसिपल है 140, interest is 7 rupees. Yes. This is what in a quarter. In how many time? Time is what? 1/4 of a year. Yes. तो अभी एक क्वार्टर में अगर 7 रुपीज आ रहा है तो एक साल में इन 1 ईयर हाउ मच वुड वी गेट? 28 रुपीज. एक क्वार्टर में अगर 7 रुपए आ रहे हैं तो एक साल में 28 रुपीज आएंगे इंटू 4, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना. सिंपल इंटरेस्ट हर क्वार्टर में सेम ही रहेगा, राइट. तो 140 फॉर 28 ईयर्स, 28 रुपीज फॉर 140 फॉर 1 ईयर. हमें क्या चाहिए? 280 रुपीज शुड बी द अमाउंट शुड बिकम 280. if the amount is 280, principal is 140, तो interest amount कितना हुआ? 140. तो they're basically asking डबल कितने साल में रहेगा. yes, ये डबल कितने साल में हो जाएगा? ये कितना है? 28 is what percentage of 140? 20%, correct? Yes or no? 28 is 20%. हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए. तो कितने साल में हो जाएगा ये? 5 years में. yes. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. if एक साल में 28 is the interest on 140, तो अगर इसको 140 कराना है on 140 तो this will become what? This is into 5, तो यहाँ पर भी into 5 years. ठीक है. 10 years is a mistake guys. 10 years 280 अगर interest होता तो please read it carefully. Amount is 280 not interest. ठीक है. Amount है 280. Okay. Okay, now simple interest सबको clear है क्या? Simple interest all clear? Any doubts simple interest में किसी को भी? No doubts? Okay, now let's go to compound interest. What happens in compound interest? In compound interest your principal is not constant. Yes, your principal is not constant. Yes. What happens in compound interest? See, we all know compound interest का formula P into 1 plus R by 100 to the power N to the power T, right? But इसमें ये लगाने वाले में ये लगाने के लिए या तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या फिर आपके पास कोई अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए, right? Which is both very rare cases. Yes. So instead what you would do? See, in compound interest अगर मैं बोलूँ मेरा प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ है. yes, 10% के इंटरेस्ट पे फर्स्ट ईयर में मेरा प्रिंसिपल 100,000 रुपीज़ है तो मेरा इंटरेस्ट कितना रहेगा? 100 रुपीज़. फर्स्ट ईयर SI CI दोनों सेम ही है. R परसेंटेज ऑफ P, करेक्ट. वही अगर मैं 2 साल में देखूंगा तो 2 साल में क्या हो जाएगा? माई प्रिंसिपल विल बिकम ओल्ड प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट, दैट इज 1000 प्लस 100. जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो इसमें लग जाएगा, मतलब 1100. तो अभी जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 1100 पे मिलेगा, जो कि कितना? 10% ऑफ 1100, 110, विच इनडायरेक्टली कैन आई से इज 10% एक्स्ट्रा ऑफ प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, है ना. तो या तो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट लगाओगे या प्रिंसिपल को चेंज करोगे. ईदर विच वेज व्हाट विल हैपन इन थर्ड ईयर? पुराना प्रिंसिपल 1100 प्लस 110, yes, which becomes what? 1210. This becomes our new principal. अभी इस पे 10% लगेगा, which is 121. That's basically what? 10% on this, correct? 110 पे मैं अगर 10% बढ़ाऊंगा तो 121 हो जाएगा.
और इन अदर वर्ड्स 10% इंक्रीमेंट सक्सेसिव एप्लीकेशन से अगर आप करोगे तो 10 + 10 + 10 × 10 100/100 कितना हो गया 21%. You can also do it using multiplication factor. 10% increase मतलब 1.1. This for 2 years will become what? 1.21. So for 100 rupees 1.21 is 121 rupees. समझ में आ रहा है ये? Are you guys able to understand this? Yes, no, कुछ बोलो. आ रहा है ना ये समझ में? Yes, alright. चलो. तो let's try out a question. Here there is a question. यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, but this is compound interest only. Okay? यहाँ पे मैंने नहीं दिया है क्योंकि अपन compound interest ही कर रहे calculate, तो compound interest ही है इसका. Okay? हाँ, correct. Optimistic girl. It will become in the form of GP. And your common ratio will basically be the multiplication factor. Yes, multiplication factor. You can do it using Pascal triangle, but when you know multiplication factor तो Pascal triangle की जरूरत है नहीं, है ना? You don't need Pascal's triangle if you know what multiplication factor is. Yes. Saurabh says B 3041.75. Very good. Gaurav says B. Optimistic girl says B. Very good. So what is asked? 2000 rupees if compounded yearly. So principal is 2000. Compounding is yearly, that means number of compounds is 1. Rate of interest is 15% for how many years? For 3 years. Yes. This if you sit and apply the formula, amount is equal to, एक सेकेंड पिछले वाले में गलत लिख दिया था, CI नहीं है, amount होगा, तो CI निकालना है तो इसमें से आप principal को subtract करोगे, ठीक है? Okay. So amount क्या है? If you use formula that is P into 1 plus R/100 to the power T. Yes. Logic use करो, 15% हर साल बढ़ रहा है. 15% every year if it increases, it's basically what? 1.15 times multiplication factor, है ना? Or if you want to do this using fractions, you can still do it using fractions. 15% क्या है? 15% is 3/20. ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो रहा है 23/20 हो रहा है ना? तो अपन 2000 को 23/20 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं. कितने बार? 3 बार. क्यों? क्योंकि 3 years है. Are you getting this? So this will become what? 2000 into 23 cube by 20 into 20 into 20. So 0 0 0 cancel, 1 2 cancel हो जाएगा. So you'll basically get 23 cube by 4. Yes, 23 cube by 4 is how much? 12,167. 12,167 by 4. So this is going to be somewhere close to 3000. 3000 से ज़्यादा है तो only answer choice more than 3000 is this. This is your answer. Cool? Yeah. So you can do it using fractions or you can do it using this also. So amount will be equal to what? 2000 into 1.15 cube. तो 1.15 क्यूब अगर इजी है करना तो वो कर लो या फिर ये कर लो, वॉट एवर. यस, चलेंगे नेक्स्ट. ऑलराइट, रीड दिस क्वेश्चन. वेरी गुड जयराज कुमार. करो ये वाला ट्राई.
तो सेविंग स्कीम बाय डिफॉल्ट अगर अपन लेंगे तो ऐसा ही होगा, बट क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये CI है, इसलिए ये CI है, ठीक है। क्योंकि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं, वरना नॉर्मली लिखा हुआ होगा। तो 50,000 का वैल्यू 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? अमाउंट निकालना है। हाँ पंकज, अमाउंट निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट? वैल्यू कितना है मतलब अमाउंट कितना है ना। वो डिपॉजिट बैंक में पड़े पड़े इंक्रीज होके वैल्यू निकलता है ना। ओके, सौरभ सेज ए, गौरव सेज ए, हाउ अबाउट अदर्स? जयराज कुमार सेज ए। लास्ट क्वेश्चन में भी, हाँ लास्ट क्वेश्चन में भी। Anyone else answer for this? अमाउंट निकालना है इसमें। So principal is $50,000. Yes, rate of interest is 10% per annum. Time given to us is 5 years. They're asking what will be the amount, what will be the value of it. So you can do it using multiplication factor. Multiplication factor will be 1.1. Either this or do it using fractions. It will become 11 by 10. 1.1 को fraction में करोगे 11 by 10. Whatever you are comfortable with, you can. तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो कि 50,000 है into 11 by 10 to the power 5, करेक्ट? क्योंकि 5 years है तो 10 to the power 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। यस, दिस इज once, this is twice. So you basically have to find out what 11 power 5 is and divide it by 2. That's it. Yes. What would be 11 to the power 5? How much is 11 to the power 5? It is 1 6 1 0 5 1. Correct? Yes. You can split it if you want. See, 11 power 1 is 11, 11 square is 121. फिर आप 121 पे वापस 11 मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज बेसिकली व्हाट 1210 प्लस 121, करेक्ट? दैट इज 1331. देन 11 पावर 4 इज गोइंग टू बी व्हाट 1331 के ऊपर आप वापस 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज 1331 अगेन, विच इज 14641. 14641. 11 पावर 5 निकालना है जो कितना हो जाएगा 14641 पे आप 0 लगा के फिर वापस यू आर एडिंग 14641. यस, दिस इज 150151. नहीं सॉरी 150, 11 पे 1, दिस इज 6. यस, ये आ गया। इसको आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? इफ यू हाफ दिस यू विल गेट 8052.5, जो कि क्या है ऑप्शन ए। ये कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन पे आप पे छोड़ देता हूँ।
How you want to do the calculation is up to you. Yes, whether you want to calculate it as 11 cube and 11 square and multiply, और 11 पावर 4 and 11 and multiply, जो भी आपको सेट होता है वो, ठीक है. कैलकुलेशन आप पे है कि कैसे करना है. यस, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. प्रोसेस लंबा है, ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, ऑप्शन नहीं है दूसरा. कैलकुलेटर अलाउड होते हैं कैट जैसे एग्जाम्स में, तो कैलकुलेटर यूज कर लो. yes, if you have a calculator then you don't have to do much, just do 1.1 multiply it with itself 5 times, जो कि आप ऐसे भी निकाल ले सकते थे. yes, then this into 50,000, 80,525.5. बट कैलकुलेटर अगर है तो फिर ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. कैट जैसे एग्जाम्स में उतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन एग्जाम्स लाइक CETs, स्नैप्स, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है ना. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है. दे आर आस्किंग फॉर 2.4 months. 2 years 4 months, sorry, 2 years 4 months. हाँ guys, anyone answer for this? What is the compound interest? Gaurav says C, 3,109. How about others? Saurabh says C, 3,109. Superb. How about others? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस स्प्लिट दिस. क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 years 4 months है ना. तो पहले 2 years का अलग से निकालते हैं. यस, 2 years का अलग से निकालते हैं. क्या होगा इन 2 years, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है. उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15% ऑफ 8,000 विच इज 1,200. यस, तो इसका प्रिंसिपल हो गया 9,200. इस पे आप वापस 15% लगाओगे, दैट इज व्हाट, 920 प्लस 460, उसका हाफ 15%. दिस इज हाउ मच, 1380. एग्रीड. तो इस पे आप 1380 ऐड करोगे, सो योर अमाउंट विल बिकम व्हाट, 10,580. 10,580. यस. अब इस 10,580 पे आपको कितना लगाना है, 15% नहीं लगाना है, क्योंकि बाकी कितना बचता है, 4 months ओनली, है ना. सिर्फ 4 months बचता है. मतलब फॉर 1 year इफ इट इज 15%, देन 4 months क्या है, 1/3 ऑफ इट, है कि नहीं. 4 months क्या है, 1/3. तो इसका भी 1/3 होगा, मतलब सिर्फ 5% चाहिए आपको, है ना. तो इसका सिर्फ 5% चाहिए आपको. सो ऑन 10,580
if you are looking for 5%, yes, 5% increment, है ना, that is what 1.05 या 5% ऐसे निकाल लो. 10% is what 1058 का half is going to be what 529, right? तो इसको ऐड कर लो, you will get your final amount, है ना. कितना आ जाएगा ये 529, है ना. So this is 90110, so 11,109. yes, this is your final amount. अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ प्रिंसिपल, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, विच इज 11,109 माइनस 8,000, दैट इज 3,109, है ना. ऑप्शन सी. yes, this would be your standard method. Are you able to understand this, guys? yeah. Now at this point ध्यान से सुनो, at this point आपको कितना मिल रहा है ऑलरेडी, आपने ये सब कर लिया, ठीक है. बट आंसर चॉइसेस को देख के भी तो आंसर कर सकते हैं. कैन वी आंसर इट यूजिंग आंसर चॉइसेस? यस. सो व्हाट इज हैपनिंग, सी यू कैन डू इट लाइक दिस. 15 you can do it like this, 1.15 for 1 year, another 1.15 for the second year, and 1.05 for the next quarter, next 4 months. This will also give you the answer if you don't want to do much of calculation. ये करके इसमें से आप 8,000 निकाल लोगे तो you will get your answer. That's it. yes. तो 1.15 square is easy. 1.15 square is how much? 5 square is 25, 11 into 12 is 132, so this will become 1.3225, right? इस पे आपको क्या लगाना है, on this you have to apply 5% extra, which is going to be 1.388. yes, on this if you get 8,000 you get 11,009, or if you subtract 1 you're basically looking at 0.4%, 40% approximately. yes, 40% approximately, जो कि आप कैसे निकाल सकते हो this approximate 40%, right? let me tell you how to do this. approximate 40% अगर चाहिए आपको तो look at this, 15 plus 15 plus 5%, है ना. 15 for 4 months is 5%. ये कितना हो गया 35%. हमें पता है this value because ये compound है, ये 35 से तो ज़्यादा ही होगा. yes, 35% से ज़्यादा ही होगा. डू यू अग्री? बट कितना ज़्यादा होगा, ड्रास्टिकली ज़्यादा होगा नहीं, हल्का सा ज़्यादा होगा, राइट. स्मॉल वैल्यू. yes, how much extra you will have here? you will have 2% extra, 2.25% extra. on this another 5, that means somewhere around somewhere around 3 or 4% extra you will get, right. 3-4% के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है. 35% निकाल लो 8,000 का. yes, which is how much, 2,400 plus 400. 2,400 plus 400, 2,800. उससे थोड़ा सा ज्यादा, 2,800 से ज्यादा वैल्यू is this. This is too much, ये बहुत ज्यादा है. This is too high, this is less, this is your answer. तो wherever possible, है ना, wherever possible try and use a way in which you can avoid that, right. वो पूरा कैलकुलेशन करना अवॉइड करो, आंसर चॉइस को यूज करो और निकालो, राइट. Now let's talk about common advisor. common divisor नहीं, ये अपने को कोई एडवाइस नहीं करेगा. common divisor n is nothing but, ये अपन ने देखा था, number of compounds per year. number of compounds per year, this is your common divisor. तो yearly एक बार आप compound करते हो, हाफ ईयरली 2 बार कंपाउंड करते हो, क्वार्टरली 4 बार, मंथली 12 टाइम्स, वीकली 52 टाइम्स, डेली 365 टाइम्स, राइट. इस n का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला बदल जाता है. यस, योर अमाउंट इज p इंटू 1 प्लस r बाई n इंटू 100, r बाई n इंटू 100
to the power t into n. yes, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट्स डिवाइडेड बाई n. तो अगर 10% दिया है, देन फॉर हाफ ईयरली योर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स व्हाट, 5%. 5% per semester, per half year. yes, and if you want to do it for 2 years, then you'll have to do it how many times, 4 times करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर. समझ में आ रहा है? इन 2 years you have 4 6 months. yes, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ट्राई करो ये वाला. ऑप्टिमिस्टिक ये नॉर्मल है. एरिथमेटिक में क्वेश्चंस कभी भी ऐसे ही होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो, राइट. द बेस्ट वे टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज टू प्रैक्टिस इनफ सो दैट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, है ना. इतना प्रैक्टिस करो कि लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए बस. वंस यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इसके बाद एवरी क्वेश्चन में कॉमन लॉजिक ही रहता है, राइट. द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन विल बी सेम ओनली. जो भी टॉपिक का लॉजिक है वही कॉन्सेप्ट का लॉजिक लगेगा, राइट. बस लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम रहता है, दैट्स इट. तो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन. Abhinav, CAT, there are easy questions in CAT, there are moderate questions in CAT, and there are difficult questions in CAT. Yes, so you will get a good mix of these questions. You will see a lot of easy questions also, questions that you can solve in less than 1 minute. You will see questions that will take you somewhere about 1 minute to 2 minutes. Yes, they are called moderate questions. And you will come across questions that take you more than 2 minutes also. Those are difficult questions. Okay. Correct Abhinav. Correct Optimistic. You are right. That's all you have to do. Whatever is given in English, convert that into mathematical expressions, your question becomes easy. Okay, Sashwat says the answer is 5150. Each question equal marks. Easy, moderate, difficult, whatever it is, same marks only. 3 marks. Jairaj Kumar says 151.505. Okay. Saurabh says 800.000 because approximated to 3 decimals. Right. Good one, Saurabh. Okay, let's answer this question now. Chalo. A bank calculates interest every month. Yes, every month. That means what is n? Every month means 12, right? एक साल में 12 बार compound करता है. In 1 year, 12 times they compound it. Yes. The saying principal is 5,000. Rate of interest is 12% per annum. If it is 12% per annum, then for every month it will become what? 12 by 12? 1% per month. What are they saying? What is the compound interest for 1 quarter of a year? 1 quarter मतलब कितने महीने होते हैं? 1 quarter is how many months? 4 months, correct? 3 months. Yes, 1 quarter is how many? 3 months. So we basically have to find out 1% applied for 3 months. Yes, on 5,000 apply 1% for 3 times. If you want to do it using multiplication factor, it will become like this. 1% applied on 100 is 1.01. This way you will get your principal. 1 quarter is 3 months. Gaurav? 1 quarter is 12 by 4. That is
3 months, 1/4 of a year na. Okay, so if you can find out 1.01 का cube, then you will directly get your answer. Yes, 1.01 का cube is how much? Because they want 3 decimal places. 3 decimal places, which means you can't approximate. Yes, approximate नहीं कर पाओगे, so you have to be careful. So this is what? 5000 into 1.030301. Yes, दिस विल गिव यू योर अमाउंट. हमें अमाउंट नहीं चाहिए, मतलब इसमें से अगर आप 1 को निकाल लोगे, दिस इज अमाउंट, दिस इज इंटरेस्ट. इसमें से अगर आप 1 को निकाल दोगे तो यू विल गेट योर इंटरेस्ट. यस, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर, व्हिच इज व्हाट? 0.030301 into 5000. Yes, which is how much? Compound interest is nothing but 151 rupees and 505 पैसे. Yes, but ऐसा करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, so that you have to be careful about. Yes, otherwise you can also do it. अगर आंसर चॉइसेस होते तो कोई टेंशन नहीं है ना, आंसर चॉइसेस होते तो कोई टेंशन नहीं, बट क्योंकि आंसर चॉइसेस नहीं है, इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. या so what you can do, 1% is nothing but 1/100. 1% is 1/100, so you're basically doing what? 101/100 3 times for 5000. Yes, there's no other easier way of doing it apart from you manually calculating. Manually calculate करना चाहते हो तो कर सकते हो. जैसे 5000 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा? 50. सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, फर्स्ट मंथ में, ईयर बोल रहा हूं, देखो फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट क्या होगा? 50. सेकेंड मंथ में क्या होगा? 50 प्लस 1% ऑफ 50 विच इज 0.5. करेक्ट, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 50.5. फॉर द थर्ड मंथ व्हाट विल हैपन? 50.5 पे यू अप्लाई 1% विच इज 0.505. आ रहा समझ में? 0.505. तो ये कितना हो गया ओवरऑल? 50 प्लस 50.5 प्लस 51.005. यस, जो कि कितना हो गया? दिस इज 151.505. तो आप बताओ कौन सा इजी था? विच मेथड इज इजी? दिस, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज दिस कैलकुलेशन कुड गेट मेसी. और दिस यूजिंग फ्रैक्शंस, बट इसमें भी आपको 101 का क्यूब तो निकालना ही पड़ेगा. और दिस इज डूइंग मंथली कैलकुलेशन. विदाउट कैलकुलेटर करने में कौन सा इजी रहेगा? जल्दी से बता. मेथड 1, 2 और 3. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. कौन सा इजी रहेगा बताओ गाइस, व्हाट डू यू थिंक? हाय जयंत, हेलो. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. हाँ सौरभ, नहीं अगर वही क्वेश्चन किसी सीईटी में होता, स्नैप में, सीईटी में, एनमैट में, तो फंस जाते ना, इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, है ना. कैलकुलेटर है नहीं तो फंस जाओगे. तो इफ देयर इज नो कैलकुलेटर देन यू डू इट मंथली बेसिस. अगर कैलकुलेटर है तो हो जाएगा.
Abhinav says C, 4.80. Okay. How about others? According to Abhinav, it is 4 rupees 80 paise. Any other answers guys for this question? Anyone? Abhinav के हिसाब से it is C, 4 rupees 80 paise. What about others? There's scheme A, there is scheme B. Yes. So under scheme A, what are they saying? 5,000 rupees, 1.5 years, 4% per annum, right? So first year में क्या लगेगा? First year में 4% लगेगा on 5,000 rupees, which will give me how much? 4% of 5,000 is going to be how much? 4 into 5,000 by 100, मतलब 2 zeros गया, 15 to 4, 200 rupees. Yes. And then on 5,200 मेरे को कितना लगेगा? आधा साल का, half a year, which is 2%. So 2% on 5,200. Are you able to understand? 2% on 5,200. Yes. So 1% is 52. 2% is going to be 104. 104 is going to be the interest this way. ऐसे करेंगे तो 104 रुपये आएंगे. Agreed? Sorry. 200 plus 104, that is 304 रुपये आएंगे. 304. Yeah, this is done once every 12 months. If I do once every 6 months, मेरे को ये 3 बार करना पड़ेगा. I'll have to do it 3 times. Yes. First semester कितना होगा? 4% नहीं होगा अभी, 2% ही होगा. एक साल का 4% मतलब आधा साल का, हाफ ईयर का 2%. So 2% on 5,000 is going to be how much? 100. On this 100 सेकेंड सेम में वापस, सेकेंड सेम में क्या हो जाएगा? इस 100 पे वापस 2%, which is 102. थर्ड सेम में क्या हो जाएगा? इस 102 पे वापस इस पे 2%, which is 1.0 to 2.04. Agreed? Say yes if you've understood this guys. ये आ रहा क्या समझ में आप लोगों को? 102 पे वापस 2%, that is 2.04. That is how much? 104.04. So overall for scheme B, what is our interest? 306.04. Agreed? यहाँ पे 304 है, यहाँ पे 306.04 है. तो what is the difference? 306.04 minus 304 is 2.04 rupees. Yes, this question is actually faster if you do it like this. ये question आप ऐसे solve करोगे तो easy रहेगा. People who are getting 4.8, please check. 4.8 जिनको भी आ रहा है प्लीज चेक करो एक बार. Done? Whoever is getting 4.8, please check. It is 2.04. Okay? So Saurabh, Gaurav, please check. Abhinav, Jairaj, correct. A is the right answer. Yes. Now let's do some questions where we find out the principal. Under compound interest, finding out the principal.
So principal ढूंढना है. You might be given what the amount is, what the interest is for particular year. You might be given what the rate of interest is, what the time is. Yes, इसके basis पे आपको principal को ढूंढना है. Okay. Let's try this first question. At 10% rate, what sum would result in an amount of rupees 9,680 in 2 years? Yes, ऐसे वाले questions आप multiplication factor से कर सकते हो. 10% is 1.1. For 2 years it is going to be 1.21. Amount दे रखा है 9,680. We need to find the principal. Principal will be what? 9,680. 1.21 times principal is 9,680. So principal is 9,680 by 1.21. Understood, guys? Which is how much? 8,000 rupees. You can go theta on this also. Reverse engineering on this. आप इसमें reverse engineering भी कर सकते हो. देखो 9,000 पे 9,000 बिग वैल्यू है ना. 9,000 पे अगर मैं 10% लगाऊंगा तो पहले ही साल में मेरे को 900 रुपए आ जाएंगे. First year itself I'll get 900 rupees. So my interest will become what? My amount will become what? 9,900. This is too big a value. मतलब इससे छोटा चाहिए. Yes. Same thing with 8,500. On this 8,500, if I apply 800 rupees, first year ka interest 850 rupees, I'll get what? 9350. Yes, 9350, which is very close. So 8,500 bhi bada hai. So our answer will be what? 8,000 rupees. Yes, 7,500 is too less. 10, 10, 20, 21% लगाना है 7,500 का. That will become too less. Yes, done. चलो, try out this question now. करो कोशिश. Try this question, guys. ये बिना कैलकुलेटर करना बहुत मुश्किल है. This will become a little complex if you try doing it without calculator, but you can do it using reverse engineering if you want to. आंसर चॉइसेस को अप्लाई करके चेक कर सकते हो. थ्री डिफरेंट रेट्स है. फर्स्ट ईयर में कितना है 7%. तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 1.07. सेकेंड ईयर में कितना है 10%. तो इसका क्या हो जाएगा 1.1. थर्ड ईयर का कितना है 12%. तो इसका क्या हो जाएगा 1.12. सो 1.12 इंटू 1.1 इंटू 1.07 ऑफ द प्रिंसिपल विल गिव यू द अमाउंट. yes, amount of what 4,745.66. yes, so fastest way of doing it would be using a calculator. You have 4745.66 divided by 1.12, further divided by 1.1,
and further divided by 1.07, which is how much? 3,599.99, which is closest to 3,600 rupees. Got it? So our principal is approximately equal to what? 3,600 rupees. Got it? But बिना कैलकुलेटर का ये करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा. Yes, you would either go from answer choices, apply, एक एक करके अप्लाई करना पड़ेगा आपको. So what will happen here? 3,600 पे पहले 7% लगाओ, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पे और 10% ऐड करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पे वापस 10% ऐड करो, उससे 4745.66 निकालो, फिर आपको 3,600 आएगा, which is a long shot. Yes? Alright, try this question. Quick. हुआ? Saurabh, Gaurav, Abhinav saying C. Okay, how about others? Others? Okay, look at this. They've given the compound interest as $525. Yes, compound interest is $525. 10% for 2 years, 1.21 will give me is the multiplication factor for amount. Yes, I want it for compound interest. मतलब क्या करूँगा, इसमें से मैं principal निकाल दूंगा, that is 0.21. Yes, so can I say 0.21 times the principal is basically कितना? 525. Say yes if you agree, understand this. Yes, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2,500. Yes, now they're saying this 2,500, what is the simple interest on the same sum? On the same sum, if I apply simple interest, yes, second case में प्रिंसिपल क्या है? 2,500. Yes, on this what am I saying? 200% of the time, so time becomes 2 years का double, 4 years, and rate of interest is half the rate. 10% है उसका 5%. Ultimately what are we doing? We are ultimately still finding just 20% only, correct? So what is simple interest? PTR by 100. If you want to do it like this, you can. 2,500 into 4 years into 5% by 100, which is how much? 125 into 4 or 25 into 20, which is 500 rupees. Are you getting this, guys? 600 नहीं होगा, 500 होगा. Say yes if you understand this.
They are not saying the time increases by 200%, नहीं, 200% of the time, मतलब 2 times the time, that's it. Not 200% increase in time, नहीं, 200% of the time. ठीक है? तो अभिनव, गौरव, सौरभ, please check this. You can do it with answer choices also. You can do it with answer choices also, but what would it fetch you? See, if I double the time and half the rate, time को मैं double कर रहा हूँ, rate को मैं half कर रहा हूँ, तो it still remains the same only, same 20% only, right? So 20% of my principal will be one of these answer choices. If you are saying 600, if 20% of my principal is 600, then my principal will be how much? 600 by 20 into 100, which is 3,000 rupees. Yes, on this 3,000, if I apply 10% for 2 years, what will happen? First year it will be 300, second year it will be 330. I will get 630, not equal to 525. ठीक है अभिनव? Are you able to understand this? I hope you are able to get this. See, when I double the time, half the rate, 4 years for 5% is still 20% only, no? 10% for 2 years or 5% for 4 years, दोनों same ही है. So option C is not right, option B is right. Okay. Now let's do some questions where we have to find the rate of interest. Yes. Compound interest में we have to find what the rate of interest will be. We will be given with compound interest, amount, principal, time, also number of compounds if there are any. Cool? चलो let's try. Read this question. Theta question है. We need only integral values. Please be careful about this. सिर्फ integral values चाहिए यहाँ पे. Integral means what? Only integer, natural numbers. Answers, anyone? Without calculator, the only way to do it would be trial and error. You can either use a calculator, or if you don't want to use a calculator, then the other method will be trial and error only. Yes. Shall we try this? आप लोग try करो. Let's see who can give the answer for this. What will be the rate of interest here? Anyone? नहीं हो रहा. ओके, देखो 2 इयर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट. व्हाट विल दिस बी? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल 1200 रुपीज इज हाउ मच? 1348.32. यस, ये कैलकुलेटर से कैसे करना बता रहा हूं. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का स्क्वायर विल बी 1348.22 by 1200.
और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर निकल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1348.22 बाय 1200. यस, तो इफ यू कैन गेट द क्लोजेस्ट वैल्यू, स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हो, है ना. जैसे 1348.22 divided by 1200, you will get 1348.32 है, सॉरी 1348.32 divided by 1200 is how much? 1.1236. yes, ध्यान से सोचो, if the last number is 6, या तो ये होगा 5% या होगा, सॉरी, या तो ये होगा 4% या 6%. एग्रीड. मोस्ट कैलकुलेटर्स में आपको स्क्वायर रूट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अगर मिल रहा है तो यूज कर लो, वेरी गुड. अगर नहीं मिल रहा है तो ध्यान से सुनो, दिस इज नॉट 2 दिस इज 3 ओके, सॉरी 3 ये तो पता है कि ये 10% से ज्यादा तो है नहीं. दिस इज नॉट 10% से ज्यादा, क्योंकि 10% ही 120 है. 2 साल में 10%, 20 प्लस 1 21% अगर मैं लगाऊंगा 1200 का, तो आई विल गेट हाउ मच? मोर देन 240 रुपीज आएगा. करेक्ट, 252 रुपीज आएगा. यहाँ पे 252 जितना इसका सीन नहीं है, मतलब 10 से तो कम में, इतना क्लियर है. 1 डिजिट नंबर होगा अपना आंसर. इट विल either बी 1.04 गिविंग अस 4%, या ये होगा 1.06 गिविंग अस 6%. यस, अब ये देखो, अगर ये 1.04 है या 06 है चेक करने के लिए 1.05 का स्क्वायर निकालो. व्हाट इज 1.05 का स्क्वायर? इट्स गोइंग टू बी 10 into 11, 110 and 25, 2 zeros 2 zeros, 1.1025. बट अपने कैलकुलेटर में कितना आया था ये? 1.1236. सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट. सो 6% इज आवर आंसर. करेक्ट. ये हो गया यूजिंग कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो हो जाएगा. स्क्वायर रूट का अगर ऑप्शन है अवेलेबल तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लो इसका. 1.06 आएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब 106%, 100% तो प्रिंसिपल ही हो गया, तो 6% इज आवर आंसर. यस. ट्रायल एंड एरर से कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू द सेम क्वेश्चन यूजिंग ट्रायल एंड एरर? सेम मेथड जो अभी मैंने आपको बताया. यस, सेम मेथड दैट आई हैव शोड यू नाउ. यस, इट इज क्लियर. यहां से यहां पे कितना डिफरेंस है देखो. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिफरेंस? 150 रुपीज का डिफरेंस है. ले देके 150 रुपीज का डिफरेंस है. करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज का डिफरेंस है फॉर 1200. तो 1200 का 150 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? ये तो अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा. दिस इज व्हाट? 5 टाइम्स, दिस इज 40 टाइम्स. एग्रीड? विच इज व्हाट? 1/8. वेरी क्लोज टू 12.5%. यस, मेरे को 12.5 कैसे आएगा? 12.5 कैसे आएगा? अगर मैं 6 + 6 + 36/100 करूंगा तो वेरी क्लोज वैल्यू आएगा मेरे को. यस, आई विल गेट 12.36. तो क्या आंसर हुआ मेरा? 6%. कौन सा इजी है आप बताओ? विच आर यू कंफर्टेबल विथ, कैलकुलेटर या ट्रायल एंड एरर? विच आर यू कंफर्टेबल विथ, कैलकुलेटर या ट्रायल एंड एरर? देखो भाई, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का ऑप्शन कई बार नहीं रहता है. मोस्ट टाइम्स यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ स्क्वायर रूट. तो फिर 1.1236 का आपको स्क्वायर रूट निकालने में बैंड बजेगी, है ना. तो कैलकुलेटर है तो ठीक है, वरना यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग इट एंड गेटिंग द आंसर यूजिंग ट्रायल एंड एरर. ओके, चलो ट्राई दिस. Try this question, very simple.
They're asking what will be the effective annual rate. Anybody answer? 6.09 says Jairaj. Jairaj says the answer is 6.09. Jairaj, you changed the name, huh? Okay. Saurabh says 6.09. Gaurav says 6.09. Very good. This is a very simple question. See, they're saying what? For 1 year, the interest is 6%. So for half a year, it will be what? 3%. But this 3% applied twice for what? Finding out half yearly ka per annum rate of interest, which will be what? Using successive application. Yeah, which is what? 3 plus 3 plus 3 into 3 by 100. This formula is A plus B plus AB by 100. Correct? Which is how much? 6.09%. That's it. So if you paid attention in the percentages classes, this is a piece of cake. Yes. Now towards the end, let's do some questions where we have to find out the time period. Yes, T. Again, using compound interest. So maybe interest would be given, principal, amount, rate of interest, number of compounding would be given. You need to find out the time here. Okay. Quickly try this. If it is not given, if nothing is given to you about the value of n, that is how many compounds, you will always assume it to be annually. Yes, that is n equal to 1. This is your default. Unless and until something is given, then you will change it. Okay. Theta question hai. Try this. Anyone answer? Gaurav says 2. Okay. Gaurav says the answer is 2. Others? Gaurav, 2 is wrong. 24 will be your answer because they're asking it in months. 24 is right. So what happens here? Again, you can do the same thing using multiplication factor, right? You know your multiplication factor here is going to be what? 7% per annum. That is 1.07. Yes. So 1.07 power whatever is the time period into your principal 30,000 should give you the amount, not the interest, the amount, which is what? 34,347. So 1.07 times your time period is going to be what? 34,347 by 30,000. Yes, that if you use the calculator, you will be getting 1.149. Am I right? 34,347 divided by 30,000 is how much? 1.1449. So
because square root option may also not be available, or finding out the cube root is not possible. So what you can do is start subtracting it, start dividing it with 1.07. So you get what? 1.07 into 1.07 is this. So we get 1.07 per t is equal to 1.07 square. That means t is 2 years, but the answer will be 24 months. Yeah, so you'll lose out on an easy question if you don't read it carefully. It is in months, right? Okay, now we have growth. So this is for us to do on the next session. We'll be looking at growth under SI. We'll be looking at growth under CI. We'll be looking at difference between CI and SI. Yes, we will be doing questions with respect to depreciation, population. Yes, so all this is for us to do on Monday. कल नहीं, Monday को करेंगे. Monday क्या है? 12th. All this we will be doing on 12th April. That is Monday. Same time, 4 p.m. to 6 p.m. Okay. Now wait, guys. There is something available in the link. If you look at the description, there is a link provided for practice. Yes, there is a link provided for practice. That is a free session for practice on SI-CI. Practice on SI and CI. This is a free session. Yes, this will be tomorrow 10 a.m. Tomorrow, that is no, sorry, not tomorrow. This is also planned on Monday only. Yeah, this is also planned on Monday only. 1 second. This is on Tuesday, 10 a.m. to 12 p.m. on Tuesday, 13th April. So by 12th April, we will be done with full SICI. 13th April morning, 10 a.m. to 12 p.m. free session. We'll be doing practice questions on SICI. Yes. So you can join this. This link will take you to the app, Unacademy learning app. It will take you. Yes. After that, you can download the app, register. You can use the code Surana Live when you register, and come live at 10 a.m. Okay, done, guys. All right, so with this, our session for today is over. Okay, guys, I want you to remind you that this coming Sunday, we have Unacademy Combat, Sunday 12 p.m. This is just 1 hour test. Yes, we will be, this is a free test. You don't have to pay for it. All you have to do is just download the app and register yourself using Surana Live. And you will be getting a chance. If you get a rank, you will be getting a chance of getting a scholarship. There's also Ask a Doubt features available for people who are on Plus and on Iconic. So if you are someone who's on Plus or Iconic, go use the Ask a Doubt feature. You can click a picture or you can take one from the gallery, highlight the part, ask the doubt, and you will get the solution for it. Yes. Let me remind you again, guys, 14th April is the last day for the prices to be hiked. Before the hike happens, please take the subscription. You can use my referral code Surana Live for taking the subscription and take the 12 or 24 months here. You can also use no cost EMI. Or if you are planning on getting a personal mentor, if you are someone who wants step-by-step guidance, then you can take Iconic subscription, where you get a personal mentor who is an alumni of IIM, Bangalore, Ahmedabad, Calcutta. These will provide you the test analysis and reports personally, OMET preparation, and all the other benefits of Plus will be included. Yes, if you want the
iconic subscription, then you can take 12 months, 24 months, use my referral code SuranaLife for your 10% discount. Here also no cost EMI options are available. So for about 2000 or 3000 rupees per month, now you'll be able to crack CAT, not just CAT but also other management entrance tests. So if you take your 1 year subscription today, then you'll be covering all these exams. Most of the CETs will be covered, CMAT will be covered. If you're planning on writing GMAT, that will also be covered. Yeah. Alright guys, thank you very much. I will see you in the next class. Keep learning. Let's crack it.